This is a little dhamal song. Actually, कौन सा mic? It doesn't matter. They're exactly. This is a song from the movie कल आज और कल. थोड़ा ट्रैक बढ़ा रहा है. मनोज को बोला ट्रैक बढ़ा रहा है. हेलो. आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए. आए हैं तो काम भी बताइए. पहले जरा आप मुस्कुराइए. आप यहाँ आए किस लिए? अजी आपने बुलाया इसलिए. आए हैं तो काम भी बताइए. ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए. मुस्कुराने की न कोई बात है. अजी देखिए तो क्या हसीन शाम है. ओह काम तो बताइए बताइए. ना 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 पहले जरा आप मुस्कुराइए. आप यहाँ आए किस लिए? तेरे बिना है हाँ नींद नहीं आती है. रियली? याद तेरी आकर आहा रोज तड़ पाती है. सचमुच? अपना बना लो हाथ जरा थाम लो. वाह वाह वाह. बार बार पूछो ना क्या? दिल से भी काम लो. काम तो बताओ. काम सीधा साधा है. बोलो बोलो. अजी लेना एक वादा है. क्या? आजा आजा शादी का इरादा है. क्या? क्या? शादी का इरादा है. शादी और तुमसे? शादी का इरादा है. ना ना ना. शादी ना बाबा ना. मगर क्यों? शादी तो बर्बादी है. क्या कहती हो? जाती है, आजादी है. नहीं नहीं. बाय बाय. अरे सुनो तो. अरे सुनो तो. सुनो तो. ओहो. किस लिए आपने बुलाया इसलिए. आए हैं तो काम भी बताइए. पहले जरा आप मुस्कुराइए. पहले जरा आप मुस्कुराइए. हाय. आप यहाँ आए किस लिए. अरे आपने बुलाया इसलिए. आए हैं तो काम भी बताइए. पहले जरा आप मुस्कुराइए. आप यहाँ आए किस लिए. आपने बुलाया इसलिए. अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए. पहले जरा आप मुस्कुराइए. मुस्कुराने की न कोई बात है. ओ जी देखिए तो क्या हसीन रात है. ओहो काम तो बताइए बताइए. पहले जरा आप मुस्कुराइए. आप यहाँ आए किस लिए. मैंने कहा काम तो बताइए. काम? काम सीधा साधा है. लेना एक वादा है. अच्छा प्यार तो निभाओगे. निभाऊंगा. भूल तो न जाओगे. न भूलूंगा. डोली लेके आओगे. आऊंगा. शादी में न जाओगे. रचाऊंगा. सिनेमा दिखाओगे. दिखाऊंगा. खाना भी पकाओगे. पकाऊंगा. बच्चे भी खिलाओगे. खिलाऊंगा. रोज न सताओगे. कभी नहीं. फिर तो हम तुम्हारे हैं. वेरी गुड. तेरे
क्या कहने हैं। हम भी तुम्हारे हैं, वाह 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 वाह, हम भी तुम्हारे हैं, वाह 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 वाह। हम भी तुम्हारे हैं। आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। थैंक यू। थैंक यू। Excellent, guys. You know, this is one of those songs जिसमें गाने से ज़्यादा आपको इसमें केमिस्ट्री और टाइमिंग की ज़रूरत है, because otherwise, no matter how well you sing it, the song is going to be ruined. And these guys just absolutely nailed that timing, chemistry, the going back and forth, because almost everything, it's not even one ends and the other begins. It's the second begins while the first one is ending on each delivery, and they do a great, great job. मज़ा आ गया, वाह वाह वाह, क्या बात है. With that, we're going to conclude the evening. Thank you everybody who stuck around for the end of the evening. Thank you everyone who made the time to come out here. Thank you Manoj for putting this together. Thank you Honey, kahan gaye? Oi yo yo, Honey Goel. Thank you so much to our wonderful hosts. There he is. Yo yo. Thank you so much Honey. And again, guys, if you're here, if you enjoyed this, buy your ticket, come over Sunday night. It's going to be a lot of fun. You'll enjoy it. You know, one thing I know कि ज़्यादा लोग नहीं बचे हैं. One thing I would like to share. I know I met a bunch of you for the first time. Really, really good advice that I was given many years ago. It wasn't about music. It wasn't about singing, but it applies to not just singing, but everything in life. If you want to be good at something, first and foremost, you don't have to be a doer of it, you have to be a consumer of it, right? अगर आप गाना सीखना चाहते हैं तो what's the first thing you do? Listen, सुने, original सुने, remake सुने, किसी और के cover सुने. So ये महफिलें जो होती हैं, it's a lot of fun, but remember the important thing here is not being able to come up here and sing, it's being able to listen to everybody else's different, because everyone has a unique take on the song, right? So become a student, become a consumer of singing, and you'll enjoy these, ye mehfilein jo hain, you'll enjoy those so much more than just sitting here just waiting कि मेरी बारी कब आएगी मैं गाऊंगा, and then you stop paying attention. Pay attention to everyone. Means to add to this, इसलिए बोलते हैं कि तानसेन बनने से पहले कानसेन बनना बहुत जरूरी है. Exactly. So I love each one of these different types of gatherings that you've put together. Each one has its own unique flavor, unique level of enjoyment, and I'm really hoping that this is going to become an excellent addition to your collection of evenings. Honey, कुछ कहेंगे आप? My only thing I'm going to say is, bring your friends. Okay, it's not about, we don't want this to become huge, but the intention that Manoj Bhai and so glad to have you Riz here. I'm glad you made that choice to be here. So let's give a big up for Riz. Because we need somebody to anchor it. We need somebody to keep it going. So I think for me it's mostly about creating this environment where people can take that one evening off of their life and enjoy. So we are just trying to make that work. So if you liked it, if you have some people who can enjoy, so we did this round table format today. Come and grab one table, sit 7 or friends around you, grab your food, talk, get your booze. I mean, what else? You have people singing, encourage each other, and encourage Manoj Bhai, Riz Bhai, people. We have Shrikant right there. He's our chef. So you can give Big round of applause. Compliments to the chef. Shrikant ji, thank you so much. So he worked with the team to put together this box today. So every time they will be creating different boxes. So it could be North Indian, it could be so that keep it interesting. Last but not the least, listen 2 lines from you. दिल से, अरे कुछ भी आप गाते हो. लोगों का मूड अच्छा है. Let's keep it that way.
नीले नीले अंबर पर गए। अरे गाइए ना। And I can't sing without this anyway. Okay. Let's not put him on the spot. Next time, prepare time, something and promise. we'll get you. Yeah, we'll hold you to it. Thank you so. Give a big round of applause for Honey Ji. Thank you again. Really looking forward to it. Looking forward to Sunday night. I think it's going to be a lot of fun. And with that, I bid everyone an excellent night. Wonderful to meet some of y'all, and good to see those whom I have met before. Looking forward to the next time we get to hang out and spend some musical time together.